सका है हम But they last about like Located on 7 hills, Lisbon is full of observation decks. They're found literally on every corner. In the center of the city and on its outskirts, you can stumble upon a sign with the inscription Miradoro, which means an observation deck in Portuguese. The word Mirador is derived from Mira do Ouro, literally, a golden look. The most romantic time to visit the observation decks is sunset. The sun floods the city with golden light. The time of natural magic and beautiful landscapes comes. देखा गया है कुछ इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वह छोटी सी गलती भी लंबे समय तक याद रखता है और पूर्वग्रह से पीड़ित। अर्थात सबसे बड़ी तृप्ति, सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि विद्या की और ज्ञान की प्राप्ति है। और इस पर आप थोड़ा अगर विचार करें, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वह ज्यादातर सुख आसानी से प्राप्त कर सकता है। श्लोक के आखिरी शब्द है अहिंसैका सुखावह। अहिंसा सुख का वाहन करने वाली है। अर्थात इंसान को सुख अगर प्राप्त करना है तो उसे अहिंसा का पालन करना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ ऐसा है, अहिंसा का पालन करना चाहिए अर्थात आपको मन, क्रम और वचन से अहिंसा का पालन करना चाहिए। अगर मन में आप किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार करते हो या और किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखते हो तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो मित्रों, हमारे शास्त्र में यह श्लोक में जो कहा गया है, ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें कही गई। इनको जीवन में, आचार में उतार कर पालन करने से हम सभी प्रकार के सुख का उपभोग कर सकते हैं। आपका आज का दिन और आने वाला समय बहुत हम देखेंगे बिना
डायरेक्शन के बिना दिशाओं के वास्तुशास्त्र कुछ भी नहीं है। तो हर चीज़ों का अपनी दिशा निर्धारित की गई है, हर दिशाओं के बारे में बताया कि कहाँ कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे हमारी मुख्य यानी कि मेन 4 डायरेक्शन होती है। एक होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये मेन डायरेक्शन है। पर वास्तुशास्त्र में सब डायरेक्शन का महत्व ज़्यादा दिया गया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य कोण यानी कोना। उसके बाद में हम लोग साउथ और ईस्ट के बीच में जो सेक्शन हो जाता है साउथ ईस्ट, जैसे हम बोलते हैं आग्नेय कोण, आग्नेय का कोना। उसके बाद में हम आ जाते हैं साउथ और वेस्ट के बीच में, जिसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, नैऋत्य का कोना। उसके बाद में हम लोग अच्छा और उत्तम रहे ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। All on the window. Created this cocktail as a tribute to Game of Thrones based on the book series A Song of Ice and Fire. If you decide to make this cocktail, make sure to take extra precaution as fire is involved. Here's the equipment you'll need to create this cocktail. First, you'll need an ice ball mold. Now, to extract and inject liquid into that ice ball, you'll need some kind of seasoning injector or syringe. The type of glass we use is very important because the glass is going to get a bit hot. And because we're introducing cold liquid to this hot glass, there's a risk of the glass cracking. So I recommend using a tempered glass, which has a higher thermal shock resistance. You'll also need something metal and sharp. You can use a paper clip here, for example. To support the ice ball on the glass, you'll need a long bamboo pick. And the fuel for the fire is going to be a high-proof alcohol. Here we're using a Gosling's 151. And of course you'll need matches or some kind of lighter. You can find links to purchase all of this equipment at cocktailchemistrylab.com. Okay, let's start by making the ice ball shell. Take your ice ball mold and pour some filtered water up to the top. Then drop it into the freezer, and you're going to leave it for about an hour and 15 minutes. Then flip it upside down and give it another hour and 15. This is to ensure that it freezes evenly. It's going to freeze from the outside in, and you want about a 1/4 centimeter of a shell remaining, with the inside still being liquid. To extract that liquid, heat up that seasoning injector and insert it directly into the top of the ice ball. Extract all of the water from inside of that ice ball until it's just a hollow shell. Now take that sharp metal object and poke a
tiny hole just a little bit above the equator of that ice ball. Insert the bamboo pick and stick it all the way through to the other side. Then create another hole straight across and stick the bamboo shoot through. Now there's probably still going to be a tiny gap where the pick comes through, so put just a few drops of water on that hole and then put it back in the freezer to create a full seal. The cocktail we're going to create to put inside the ice ball is called the Havana, so start with some 80 proof dark rum. Squeeze in some fresh lime juice, a little bit of Cointreau, some simple syrup for a little extra sweetness. Squeeze in a splash of orange juice. And finally, a few dashes of orange bitters. You can find the measurements to this cocktail recipe at cocktailchemistrylab.com. Now you want to shake this one up nice and cold so it doesn't melt the ice ball. At this point, go ahead and prepare the glass by pouring in some of that high-proof rum. Now, it's also a good idea to have a glass of water nearby in case there's an issue with the flame. Okay, now it's time to fill up the ice ball shell with your cocktail. Grab the seasoning injector and very carefully inject the cocktail inside of the ice ball. Fill it all the way to the top. Now you're ready to present the cocktail. Carefully ignite the liquor at the bottom of the glass. Then with 2 hands, slowly place the ice ball directly on top of the flame. Make sure that it's centered. The flame will slowly start to melt the bottom of the ice ball. Soon the shell will melt and out will come the cocktail and extinguish the flame. Hey guys, I get a lot of requests for recreating cocktails from TV shows and movies, and I wanted to